Good evening. Mr. Deepak Shetty, MD and CEO, JCB India, Mr. Tarun Das, Chair of our Advisory Council, and members of the Advisory Council for the JCB Prize, our accomplished jury for 2023, our authors, translators, publishers, and everyone who has joined us this evening, in person and virtually. It gives me immense joy to welcome each one of you to the award ceremony for the JCB Prize for Literature 2023. Tonight, as we honor the finest contemporary fiction from the past year, let us first revisit the charm of a bygone era. We are delighted to welcome Fauzia Dastangoi, a true custodian of the tradition of Dastangoi. Having performed over 100 shows all over India and in UAE, Fauzia has recently been recognized as India's first woman Dastangoi artist by the Ministry of Women and Child Development, Government of India, for preserving and promoting this art. Dastangoi as an art form dates back to the 16th century in the Indian subcontinent, and it transforms written stories into lively performances, bridging the gap between the textual world of literature and the heritage of oral storytelling. Let us now relive the simplicity of our childhood as Fauzia recounts the story of Attila from R.K. Narayan's Malgudi days. चेक। ख्वातीनो हज़रात आदाब, हाजरीन, दास्तान गोई की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। ये आम दास्तान गोई की महफिल नहीं है। इसका आगाज़ करने से पहले मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर, जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन, मीता कपूर और तमाम हजरात जो यहाँ मौजूद हैं। ये पहली बार एक ऐसा तजर्बा है कि मालगुडी डेज़ को पहली बार दास्तान की फॉर्म में हम पेश करने जा रहे हैं। इसे कंसेप्चुलाइज किया है डॉक्टर बकुल देव ने, इसको अडेप्ट किया है हिंदुस्तानी में विनीता दीक्षित और डॉक्टर सईद आलम ने। परफॉर्मेंस और डायरेक्शन मेरी है। मेरे साथ हैं सुदीप, जो हमने सोचा कि मालगुडी डेज़ है तो वही थोड़ा सा म्यूज़िक जो हमारे कानों में एक ख़ास तरह की जो उसकी एक म्यूज़िक है, जब वो बजता था दूरदर्शन पे हम सबको याद होगा, तो वो तो बनता है। तो हाज़रीन, दास्तान गोई की इस महफिल में सुनने और सुनाने वालों की बराबर की भूमिका रहती है। भाई, अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आए या आपको लुत्फ़ आए तो आप कहेंगे। भाई, एक ज़माना था, मेरा ऐसा मानना है, कहा जाता था कि जिसकी ताली पिट गई उसकी इज्जत उतर गई। भाई, मेरा ऐसा मानना है कि आज जिसकी ताली नहीं पिटती, ज़माना बदल चुका है, उसकी इज्जत उतर जाती है। तो हम, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप दिल खोल के दाद दीजिए, ताली बजाइए, वाह कीजिए, मगर दास्तान में हमारे साथ रहिए। वैसे सिर्फ हंसने से भी काम चल सकता है। तो ये दास्तान है एक पेट डॉग की, और भाई कुत्ते को हिंदी में कहते हैं श्वान, फारसी में कहते हैं सग। हमने इस दास्तान में सग का इस्तेमाल किया है। तो जहाँ जहाँ सग आएगा आप समझ जाइएगा कि किसका जिक्र हो रहा है। तो हाजरीन, आप सबकी इजाज़त से मैं और सुदीप आज की शाम का आगाज़ करते हैं। घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम, लाए पिल्ला ढूंढ के रखा अटीला नाम। रखा अटीला नाम बड़ा खूंखार बनेगा, घर में रखते पाँव हर एक इंसान डलेगा।
मगर हो गया दोस्त पलट कर ऐसा चक्कर, पता चलेगा आज तुम्हें ये किस्सा सुनकर, पता चलेगा आज तुम्हें ये किस्सा सुनकर, पता चलेगा आज तुम्हें ये किस्सा सुनकर। तो हाज़रीन, ये दास्तान है शक की। भाई बखुदा लिल्लाह इसे सगे संबंधियों की दास्तान मत समझ लीजिएगा। असल में ये दास्तान शुरू होती है उस खुशफहमी भरे लम्हे से, या उम्मीदों भरे लम्हे से, या गलत फहमी भरे लम्हे से, जिस वक्त एक अदद खानदान के अफराद ने एक अदद शक का नाम रखा एटीला। अब एटीला कौन था? अजी एटीला आज से 1500 बरस पहले हुन नामी कबीले का सरदार हुआ करता था, और रोमन सल्तनत के तो उसने नाक में दम कर रखा था जनाब, छक्के छुड़ा रखे थे, और बज़बान उर्दू उसे कह सकते हैं दहशते यूरोप। अब जैसा नाम वैसा काम। तो भाई शक का नाम रखने का राज तो आपके सामने फाश हो ही गया होगा ना। तो दिल दहलाने वाला ये जाबाज शक, जिससे उम्मीद थी, जो कि सिर्फ 2 महीने का था, चौड़ा जबड़ा, लाल लाल सुर्ख आंखें, चपटी नाक और तरबूज जैसा सर, उससे ये उम्मीद थी कि ये बड़ा होकर अपने नाम पर बिल्कुल खरा उतरेगा। अरे भाई बड़ी उम्मीद से लाए थे उसको। मोहल्ले में चोरियां जो हो रही थी, भाई पुलिस पे तो किसी को भरोसा था नहीं, खुद पुलिस को भी खुद पर भरोसा नहीं था। भाई यही कहा जाता है ना कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। मैं तो कहती हूं कि अपने सम्मान की रक्षा भी स्वयं करनी चाहिए। तो जब ये बात शुरू हुई कि एक शक की तलाश की जाए, तलाश की गई एक डॉग फैंसियर की। असली कहानी में उसे डॉग फैंसियर ही कहा गया है, जिसका अप्राकृतिक असाहित्यिक तर्जुमा हो सकता है माहिर शक। तो माहिर शक ढूंढा गया, इसलिए क्योंकि भाई शक की तरबियत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी, एक बात भी 19-20 नहीं होनी चाहिए थी। माहिर शक के सामने गए, उसने हमारे सामने लाके रखा एक नन्ना मुन्ना शक और कहा, अजी जनाब आप ठीक 1 महीने बाद आइए और ले जाइए। अगर 6 महीने बाद इस शक ने आपके मोहल्ले के चोरों का नाक में दम नहीं कर दिया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। ये कहकर उसने अपनी मूंछों पर डींग मारी और उसका शिजरा हस्बो नस्ब वो बयान करना शुरू करा। ऐसा लगा कि जैसे सारी दुनिया के सगों का खूनखार तरीन खालिस तरीन खून इस सग में दौड़ रहा है। बस फिर क्या था, एडवांस दे दिया गया और ठीक 75 रुपए देकर 1 महीने बाद उसे घर ले आए। अब जब घर ले ही आए थे तो जनाब शुरू हुआ नामकरण। भाई नाम रखना भी तो जरूरी है ना, ये तो भाई इसके लिए मशवरा बहुत जरूरी है। तो सारा खानदान बैठा गया। छोटू ने कहा टाइगर रख देते हैं, टाइगर बड़ा इन है भाई, आजकल बहुत चल रहा है टाइगर टाइगर टाइगर। अम्मा ने कहा पूरी दुनिया के पेट डॉग का नाम ना टाइगर होता है। हाँ सीजर, सीजर कैसा रहेगा? अम्मा 15,000 सीजर सिर्फ साउथ इंडिया में है। अम्मा इसकी जो आंखें हैं ना एकदम लाल लाल है, क्यों ना इसका नाम रखे शोला। है जब ये शोले की तरह भागेगा चोरों के पीछे तो बस। अम्मा ने सिर्फ देखने पर गुजारा किया। तो अम्मा ऐसा करते हैं तूफान रख देते हैं। हाँ 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 ये आएगा तूफान की तरह, आंधी की तरह, और सारे चोरों का सत्यानाश करके। तूफान थोड़ी देर में तुम इसे कहोगे कि इसका नाम, इसको हम सुनामी बुलाते हैं, है ना? सुनामी इधर आओ, सुनामी इधर आओ। नाम रखेंगे तूफान, सुनामी। मोती, भाई मोती तो बहुत अच्छा नाम है। मोती तो बहुत अच्छा नाम है, बचकाना नाम है मोती अम्मा। तभी कहीं से आवाज आई कि इसका नाम रखते हैं एटीला। अरे भाई ऐसा खूंखार था, ऐसा खूंखार था कि पूरी दुनिया का नाक में दम कर रखा था। तो हमें तो ऐसा ही एक शख्स चाहिए ना। हाँ ये बात तो सही है। तो नाम रखा गया एटीला, मगर एटीला को अपने नाम के मायनों से कोई सरोकार नहीं था।
इसके बिल्कुल विपरीत वो बिल्कुल मानवतावादी था। जनाब, रोम तो छोड़िए, उसने आज तक किसी गिलहरी तक का कत्ल नहीं किया था। अजी गिलहरी तो छोड़िए, मैं तो कहती हूँ किसी चींटी तक को नहीं मारा था। आहा, जब भी कोई सामने आता, एटीला अपनी लाल लाल शोला भरी आंखों से उसे देखता और उसकी आंखों में सिर्फ उसके लिए प्यार, अपनाइयत, मोहब्बत, बस। अरे क्या सब्जी वाला, क्या दूध वाला, क्या फूल वाला, क्या रिश्तेदार, क्या दोस्त, एटीला के सब जैसे पुराने जन्म के दोस्त थे। सिर्फ दोस्त थे पुराने जन्म के। हाँ, लेकिन जब जब दरवाजे पर घंटी बजती थी और एटीला दौड़ता हुआ भागता था दरवाजे की तरफ, बस इतना ही। जैसे ही दरवाजे पर कोई आया, उसने प्यार भरी नजरों से एटीला को देखा और एटीला ने अपने दोनों बाजू उसके पैरों पर रख दिए और कहा, खुशामदीद दोस्त। फिर उसे लगा कि जो दौड़ के जो वो दूर से यहाँ आता है ना, इससे आने जाने वाले जरा डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। तो उसने ये भी तर्क कर दिया, अब जब भी घंटी बजती, एटीला गर्दन उठा के उसकी तरफ देखता, आंखों से खुशामदीद कहता और गर्दन मोड़ लेता। अम्मा ने कहा, क्या बकवास है ये, इसका नाम ना हम डब्बू रख देते हैं। डब्बू, डब्बू ही इसका नाम रखना चाहिए था। अब हमारे छोटे साहब हैं, वो फौरन ताईद में उतरे, अरे अम्मा डब्बू क्यों रखेंगे? आपको पता है वो जो हुन नामी जो कबीले का सरदार था ना, उसने अपना पहला कत्ल कब किया था? 14 साल की उम्र में। तो आप थोड़ा इंतजार करिए अम्मा, इसके एटीला बनने में अभी वक्त है। एटीला बनने में वक्त है, सुबह जो फूल लेकर आते हैं ना, ये उनको भी नहीं रोकता। अम्मा, हम इसे फूल चुराने वाले को पकड़ने के लिए लाए हैं या चोर को? तो कितने चोर पकड़े हैं इसने अब तक? अम्मा, चोर आएगा तो ये पकड़ लेगा ना। और आप क्या चाहती हैं कि ये रोज सुबह उठ के और आपके वो फूल चुराने वाले को पकड़ ले? अच्छा, तो ये रात भर क्या करता है भाई? हाँ, क्या करता है ये रात भर? जागता है अम्मा, जागता है। तो इससे कहो कि ना जागा करे, क्योंकि अगर ये जागेगा, चोर आएगा तो ये पूरे घर का मुआयना कराएगा, उसे सामान देगा और ये जा और वो जा। खैर, जिस घर में ये बातें हो रही थी, उससे कोई 3 मील दूर चोरों के चोर, शहंशाह चोर रंगा, जिन्होंने सबका नाक में दम कर रखा था और जिनको कोई पुलिस, कोई जासूस, दुनिया की कोई मिलिट्री पकड़ने में नाकाम थी, जिससे ये उम्मीद की जा सकती थी कि एटीला उसको पकड़ेगा, उसने एक दिन एटीला की मौजूदगी से बेखबर एटीला के घर में सेंध लगाई और सारा मालो असबाब लूट के, जेवर वेवर सब डाल के, बस वो गेट की तरफ बड़ा ही था, जाने ही वाला था कि उसने सामने देखा एटीला अपनी लाल लाल आंखों से उसको घूर रहा था। रंगा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे। उसको लगा कि आज तो शामत आई, आज कोई नहीं बच सकता। जब बहुत देर तक एटीला उसको देखता रहा, घूरता रहा, तो अपने दोनों हाथ उसके पांवों पे प्यार से रख दिए। रंगा की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, उसने कहा, भाई भौंकोगे तो नहीं ना? एटीला ने फौरन सर झुकाकर हामी भरी। अब रंगा की हिम्मत और बढ़ी, उसने 2-4 कदम वो आगे बढ़ा, एटीला भी उसके साथ साथ आगे बढ़ा। तब उसको लगा, एटीला वो देखो, बिल्ली। एटीला ने जैसे ही बिल्ली का नाम सुना, वो दौड़ के बिल्ली के पास पहुंचा। इसलिए नहीं कि उसे बिल्ली से कोई दुश्मनी थी, बल्कि इसलिए वो जानना चाहता था कि बिल्ली मौसी आप कहाँ थी? इतने दिन आपने अपने भांजे का कोई खैर खबर ही नहीं ली। अभी वो बिल्ली मौसी का हाल चाल ले ही रहा था। रंगा ने सोचा कि बस अब मैं इधर से निकलूं, उधर से निकलूं। वो कूदने को तैयार ही था कि एटीला फिर कूदकर उसके सामने आ गया, जैसे कह रहा हो, भाई मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे थे? एटीला ने उसे इधर घुमाया, उधर घुमाया, यहाँ घुमाया, वहां घुमाया, मगर रंगा का पीछा एटीला ने नहीं छोड़ा।
थक हार कर वो उसे अपने घर ले गया, ये सोचकर जो अपने घर में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो भला उसके अपने घर में क्या बिगाड़ेगा। अब इधर जब सुबह हुई तो घर में कोहराम मचा हुआ था। अम्मा ने कहा था, हमने कहा मैं पहले ही कहती थी, अरे 4 चौकीदार रख लेते, उनको खिला पिला देते, ये किसको पकड़ के लेकर आ गए थे। छोटू ने कहा अम्मा वो एटीला को भी ले गए तो अच्छा हुआ ना ले गए, अरे ये उसको इनाम देना चाहिए और कि उसने इस एटीला से हमारा पीछा छुड़ाया। बड़े भाई ने कहा तो क्या जो रिपोर्ट लिखवाई है पुलिस में वो हम वापस ले लें। अम्मा ने घूर कर बड़े भाई को देखा। खैर 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, शायद सब्र आ ही जाता इस चोरी पर। भाई साहब बाजार में टहल रहे थे, टहलते टहलते क्या देखते हैं, सामने कोई एटीला जैसा, नहीं एटीला नहीं हो सकता, इतना मैला कुचैला, और उधर एटीला की मौज थी। अब तो भाई वो जहां चाहता था जाता था, जिसके सामने खड़ा होता था दुम हिलाता था, प्यार करवाता था, और बस मौज ही मौज थी, वो अपनी मौज में गुम था। बड़े भाई साहब ने सोचा कि इसका नाम तो पुकारो, अरे सुनो एटीला। एटीला ने बढ़ के बड़े भाई साहब को देखा, रंगा उसके साथ था। रंगा को लगा कि भाई अब आई शामत। उसके बाद जो रंगा ने दौड़ लगाई, वो दौड़ा जनाब, अगर ओलंपिक में दौड़ता तो गोल्ड मेडल ले आता। लेकिन खैर अब रंगा एटीला भाई साहब, रंगा एटीला भाई साहब, रंगा एटीला भाई साहब, इसी भाग दौड़ में किसी तरह से एटीला आके सामने रुका रंगा के, और रंगा गिरा धड़ाम। रंगा की जेब से निकले अम्मा के झुमके, जिनको वो बेचने के लिए ले जा रहा था सुनार के पास। भाई साहब कभी झुमकों को देखते, कभी रंगा को, कभी एटीला को। झुमके रंगा एटीला, झुमके रंगा एटीला। भाई साहब पे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक समझ में आया भाई साहब की आस्तीनें चढ़ चुकी थी। उन्होंने कहा भाई यही है वो चोर। और अभी भाई साहब अपना हाथ साफ करने ही वाले थे कि जैसे कि फिल्मों में होता है, कहानी के आखिर में होता है, पुलिस आ गई और पुलिस ने रंगा को रंगे हाथों पकड़ा और तमाम जेवर भाई साहब के हवाले किए। और भाई साहब ने एटीला को लिया और घर में जैसे ही दाखिल हुए और सारा मामला बताया तो जनाब अब एटीला का वही रुतबा था घर में जो कालिदास का विद्युत्मा को हराने के बाद हुआ था। अम्मा तो उसे कसीदे पढ़ रही थी, भाई वाह क्या सग है, क्या एटीला है, अजी एटीला ने ऐसे काम करे थे क्या, अपनी जान पे खेल के अजी जासूसी की है, जासूसी, अपनी जान जोखिम में डाली है सारा सामान लाने के लिए। भाई वाह वाह वाह, ये सब तो भाई एटीला से भी आगे है, ये है वो है वो है। अब एटीला का रुतबा अलग ही था घर में। भाई दिन रात लवाजमात खाने को मिलते हैं, अम्मा उसकी सेवा करती हैं और जनाब मोहल्ले के सारे चोर भी अब एटीला का नाम सुन के थर 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 कांपते हैं। लेकिन ख्वातीनो हजरात, ये तो शुक्र कीजिए कि एटीला को इंसानी जबान नहीं आती थी। अगर आती तो उसका भी वही हाल होता जो कालिदास का हुआ था विद्युत्मा को हराने के बाद, जब वो बोल पड़ा था। तो ख्वातीनो हजरात, ये भी है इत्तेफाक का एक सच्चा वाकया, ये भी है इत्तेफाक का एक सच्चा वाकया। कुछ हुस्न की खता न थी, मजनू कोई बना, कोई लड़ा इधर तो जीत का सेहरा कहीं बंधा, भिश्ती भी एक दिन को शहंशाह बन गया। ये हुस्न इत्तेफाक का ताज़ा पयाम है, सीधे से एक सक्का शुजाओं में नाम है, सीधे से एक सक्का शुजाओं में नाम है, सीधे से एक सक्का शुजाओं में नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन, ख्वातीनो हजरात। बहुत जल्द हम मालगुडी डेज़ की और बहुत सारी कहानियाँ आपके सामने लेकर आने वाले हैं।
तब तक इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया। Thank you, Fawzia, for reminding us of R.K. Narayan's timeless mastery in storytelling. This evening is not merely a culmination, but a continuum. India's literary sphere, rich in diverse tongues, stands united, crafting a narrative far greater than the sum of its parts. This journey, which began 6 years ago, was ignited by Lord Bamford's vision of presenting global audiences with the finest works of modern Indian storytelling. It has enabled us to create a platform where Indian literature is just not celebrated, but revered. Thank you, Lord Bamford. This is the 6th year for the JCB Prize for Literature, and the heartbeat of Indian literature echoes with more fervor than ever. This was made possible with the unwavering support of Mr. Deepak Shetty. Thank you, Mr. Shetty, and everyone at JCB India. To our Advisory Council members, Mr. Tarun Das, Chair for the Advisory Council, Ms. Firoza Godrej, Ms. Saida Imam, Dr. Harish Trivedi, Mr. Vivek Shanbag, and Ms. Arundhati Subramaniam. We extend our heartfelt appreciation and gratitude to each one of you. I request Mr. Shetty to please join us on stage and address the audience. Namaskar. The Chair and the members of the Advisory Council, the Chair and members of the jury, dignitaries, friends from the media, my colleagues from the JCB family, including some of our dealer partners, ladies and gentlemen, good evening. It is remarkable how time flies. The JCB Prize for Literature, the most coveted award in the field of Indian writing, is already in its 6th edition. I missed being with you last year because of a personal bereavement, and am therefore truly delighted to be in your company today. Lord Bamford institutionalized this award as a symbol of Bamford family's commitment and affection for India. In a short span, it has made a place for itself because of its unique structure, one which awards and celebrates writing in Indian languages representing different cultures. The Indianness of this award is reflective of the diversity of our country. We are privileged to meet authors and translators from different parts of India every year. And this distinctiveness is once again reflected in the shortlist for 2023, with 3 translations from Hindi, Tamil, Bangla, and 2 books written originally in English. The recent break allowed me to read a few select books from the shortlist, and as always, I feel the jury has had a tough task at their hand. I simply don't know how you differentiate with all these books which come from different genre. A book which talks about what happened in the streets of Mumbai and a book which talks about the Mughal era. I would not want to do this job. So really my compliments to the members of the jury. Friends, today India is acknowledged as a rising economic power. The world is looking at us differently. We are making our mark in technology, manufacturing, services, among many other sectors. However, India has a lot to offer. With a rich history of art and culture, it is only fitting that our literature also gets the position that it always deserved. This award showcases the depth of vernacular languages and is reflective of a vast literary landscape, something which the world would also benefit from. The award is also about Lord and Lady Bamford's special bond with our country, a place that they have loved so much. Even though the award has nothing to do with the business that JCB is in, it is their way of giving back to India. I thank Lady Bamford for her vision and her CSR initiatives. In addition to this prize, the Lady Bamford Charitable Trust
also significantly supports the rejuvenation of indigo art through Neela House, a center of excellence for craft in Jaipur. Whether it was for COVID relief or our work with children and women in schools and self-help groups, especially the focus on girl child, our initiatives have made a positive difference in the lives of so many across the country. Inspired by the same philosophy, we are promoting gender diversity at our factories as well. JCB today has 34% women on the shop floor in our facility in Jaipur, in the conservative state of Rajasthan, and I'm pleased to mention that in our new world-class manufacturer facility in Vadodara, we have 52% diversity on the shop floor. Thank you. Something that has been noted as an industry benchmark in heavy engineering. This integration with the society has made JCB's journey of over more than 43 years so much more wholesome in India. But before I conclude, I'll be failing in my duty if I don't thank everyone who has made this initiative successful. Respected Mr. Tarun Das, the Chairman of the Advisory Council for the JCB Prize for Literature, thank you, sir, for your guidance and mentorship as always. The vision set by the Council in effect sets the tone for the award for the year. I thank the members of the jury, especially the chair, Srinath Perur, for the time and commitment all through the year. The literary director, Meeta Kapoor, the JCB Literature Foundation team, and all our well-wishers who are amongst us today. And finally, I congratulate all the shortlisted authors and wish them all the best. Thank you all for being with us tonight. I look forward to interacting with you as the evening process progresses. Thank you once again. Have a nice evening. Thank you, Mr. Shetty. Our esteemed jury, Srinath Perur, the chair, Kaveri Nambisan, Mahesh Tatani, Shoma Ghoshal, and Swati Tyagarajan. Your diligence and passion are the bedrock of this celebration. I request Srinath Perur to join us on stage and address the audience. Hello, everyone. Over the last 6 or 7 months, the jury has read and reread dozens of novels submitted for the prize. To be honest, I did not expect to enjoy the reading as much as I did. It really has been a good year for fiction. So much so that the jury would have been delighted to have had a longer long list. But we were limited to 10 books, and we all reluctantly let go of books we were attached to. When it was time to decide the shortlist, again, each of us had more than 5 books we wanted to see on it. But we also had exactly 5 books in common, and that became our shortlist. We met this morning, and after a little back and forth, we picked a winner. The announcement will be made later this evening. Some very quick observations from reading for this year's prize. Going by numbers, it would seem that there continues to be an enormous appetite for fiction based on history, mythology, and some combination of the two. But most of these books, it turns out, are not doing much with this very rich material. That said, we do have some excellent historical fiction on this year's shortlist. Several novels this year were brave enough to attempt addressing contemporary issues. So these writers took on the difficult task of writing fiction almost in real time. And a few novels attempted, quite successfully, to blur the distinction between what gets called literary and genre writing. The jury also often wished that books had received more attention from editors. Some of you here work in publishing, I think, and there's no doubt that there are systemic reasons for the way things work right now. But it would be wonderful if something could be done to ensure that more books reach their full potential. Comparing books is a difficult task at the best of times. The JCB Prize is one of the few platforms where
translations into English are read alongside books written originally in English. And this poses additional challenges for a jury. Novels written in English often read better where the prose is concerned, and novels written in other Indian languages often have material that feels fresh in English, but writing that can feel stiff in translation. Much of this is, of course, a matter of taste and habit, and my hope and prediction, to some extent, is that reading these two categories together, as the JCB Prize does, will in the long run lead to a cross-pollination, a kind of cross-pollination of style and content that will benefit both these categories. For the last few months, I have been talking and sometimes arguing about books written, about the books we read with my fellow jury members. This has been an education and an absolute pleasure, so thank you all for that. I now call on them to join me on stage. Mahesh Dattani. Shomak Ghoshal, Kaveri Nambisan, and Swati Tyagarajan. Meeta, would you like to join us for a photograph? Thanks, everyone. Thank you so much, Srinath. This year's shortlist is a testament to the dynamic and evolving story of India. The characters created by our authors live amongst us, breathing the same air, dreaming the same dreams, fighting the same struggles. I request the shortlisted writers and translators to join us on the stage and sign copies of their books. We are missing Perumal Murugan, Janani Kannan and V. Ramaswamy's presence since they couldn't join us this evening. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Manoj Rupra, Hansta Sovendra Shekhar, Vikramajit Ram, Manoranjan Vyapari and Tejaswini Apte Ram. Could you please sign a copy each of your books? I would like the shortlisted writers and translators to just come closer together for a picture, please. Thank you.
And now for the moment we've all been waiting for. I request Lord Bamford to announce the winner for the JCB Prize for Literature 2023. Good evening. Namaste. What a year it's been for India. All eyes have been on your wonderful country this year, hosting the G20, landing on the moon, and the first to do so on the lunar South Pole, no less. What an achievement. Well done, India. And now, the 6th edition of the JCB Prize for Literature is upon us. How wonderful it is that the prize is maturing into something really special in Indian literary circles. My thanks again go to Meeta Kapoor, literary director of the prize, for all of her continued hard work. It doesn't go unnoticed, Meeta, and it is appreciated by us all at JCB. Our thanks also go to the eminent members of the jury, 5 remarkable people who've had to judge the merits of many written works. Thank you all. Let's get straight to the key event of this evening, shall we? I'm delighted to have been asked, once again, to announce the winner of the JCB Prize for Literature. Isn't it wonderful that translated works feature so strongly again in this year's shortlist? Hindi, Tamil, and Bengali all feature this year, underlining the true diversity of Indian writing from right across the country. But of course, the original English language books on the shortlist stand an equal chance of winning the prize. So the burning question right now is, which of the 5 shortlisted books has won the prize? Yes, the moment you've all been waiting for. The winner of the JCB Prize for Literature 2023 is Firebird by Perumal Murugan, translated from the Tamil by Jananani Kannan. Many, many congratulations to the winner. Perumal Murugan and Janani Kannan, and the publishers, Penguin Random House, India. I request Mr. Shetty to please present the award to Sundaram Kannan on behalf of Perumal Murugan and to Mansi Subramaniam on behalf of Janani Kannan. I request Srinath to please come up on stage for a picture.
Since Perumal Murugan could not be with us today, we have a video message from him. வணக்கம். மனிதர்கள் வெகுகாலம் உணவுக்காக இடம்பெயர்ந்து கொண்டே இருந்தார்கள். ஓரிடத்தில் நிலை கொண்டு வாழ்வதே மனிதரின் விருப்பம். கிட்டத்தட்ட எல்லா உயிர்களின் விருப்பமும் அதுவாகவே இருக்கும். இடைவிடாத அலைச்சலை எந்த உயிர்தான் விரும்பும்? இன்று பெருமளவு ஓரிடத்தில் நிலை கொண்டு வாழும் வாழ்வு மனிதருக்கு அமைந்திருக்கிறது. எனினும் இடம்பெயரல் முடிந்துவிடவில்லை. இயற்கை மாற்றங்கள், அரசியல், அதிகாரம், போர், வேலை, குடும்பம் முதலிய பல காரணங்களால் இடம்பெயர நேர்கிறது. ஓரிடத்திலிருந்து பெயர்வதும் துன்பம், இன்னோரிடத்திற்கு சென்று நிலை கொள்வதும் துன்பம். நிர்பந்தம் காரணமாகவே இத்தகைய துன்பங்களுக்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கிறது. 60-70 ஆண்டுகளுக்கு முன் நேர்ந்த ஒரு வேளாண் குடும்பத்தின் கட்டாய இடம்பெயரலை மையமாக கொண்டு எழுதிய நாவல்தான் ஆலண்டாப்பட்சி. சொந்த ஊரும் நிலமும் குடும்பமும் அந்நியமாகி போன துயரம். புதிய ஊர், புதிய நிலக்காட்சிகள், புதிய மனிதர்கள், புதிய சூழல். அவற்றை உள்வாங்கிக் கொண்டு நிலை பெற வேண்டும். இவ்விரண்டையும் ஒரு குடும்பம் சமாளிக்கும் திறத்தை எழுதி பார்க்கும் விருப்பமே இந்நாவல். என் முன்னோர்களின் இடம்பெயர் கதைகள் பலவற்றை கேட்டிருக்கிறேன். பல தலைமுறைகளாக வாழ்ந்த நிலத்தை விட்டு எங்கள் குடும்பம் இடம்பெயர்ந்ததை என் இளவயதில் நேரடியாக அனுபவித்திருக்கிறேன். இடம்பெயர்ந்து சென்ற எங்கள் உறவு குடும்பங்கள் பலவற்றின் கதைகளையும் அறிந்திருக்கிறேன். அவற்றிலிருந்து திரட்டி எடுத்த சாரமே முத்து, பெருமாயி, குப்பன் உள்ளிட்ட ஆலண்டாப்பட்சியின் பாத்திரங்கள். இடம்பெயர் துன்பமும் பயணம் தரும் பலவிதமான அனுபவங்களும் இயைய இந்நாவலை எழுதினேன். இது என் முன்னோர் கதை மட்டுமல்ல. எங்கள் குடும்பம், என் சொந்த வாழ்க்கை ஆகியவற்றை காட்டுவது மட்டுமல்ல. சிறிதாகவோ பெரிதாகவோ இடம்பெயர நேரும் ஒவ்வொருவர் மன உணர்வையும் இந்நாவல் ஏதோ ஓரிடத்தில் தொட்டு செல்லும் என்று நம்புகிறேன். நாவலுக்குள் இருக்கும் வேளாண் வாழ்க்கை முறை, இன்றைய நவீன வசதிகள் பலவும் இல்லாத பழைய காலம், நிலவுடைமை வாழ்க்கைக்கே உரித்தான குடும்ப உறவு முறைகள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ளும் அனுபவத்தையும் இந்நாவல் வழங்கும். இந்நாவல் ஆங்கிலத்தில் ஃபயர்பேர்ட் என்னும் தலைப்பில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியான பிறகு விரிவான வாசகர் தளத்தை சென்றடைந்திருக்கிறது. வாசகர் விரும்பும் நாவலாக இது மாறியிருக்கிறது. இந்நாவலுடன் ஒவ்வொருவரும் தம்மையும் இணைத்து கொள்வது மகிழ்ச்சி தருகிறது. இப்போது JCB வழங்கும் உயர் விருதுக்கும் இந்நாவல் தகுதி பெற்றிருப்பது மிக முக்கியமான அங்கீகாரம் என்று கருதுகிறேன். இந்நாவலை எழுத காரணமான என் முன்னோர்கள், எழுதும்போது உதவியாக இருந்த என் குடும்பத்தினர், நாவலை தமிழில் வெளியிட்ட நண்பர் காலச்சுவடு கண்ணன், ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் பென்குயின் நிறுவனம், மொழிபெயர்த்த ஜனனி கண்ணன், JCB விருது நடுவர் குழு, JCB நிறுவனம் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். வணக்கம். Thank you, Perumal. Janani Kannan, the translator, also couldn't join us today, so there's a video message from her as well. Vanakkam. This is quite surreal for me to be recording this video. Never in my wildest dreams did I think that I would be sharing the stage with such literary talent, let alone win this award. This would not have been possible without the group of people that I have backing me. And I'd like to take a minute to acknowledge Kannan Sundaram sir for giving me this opportunity, for Ambai for making the connection to Kannan Sundaram sir, Perumal Murugan sir, this is your work, thank you for letting me be part of it, Manasi Subramaniam and her wonderful team for the support they have provided throughout this journey, and to my own family to have put up with all my quirks and my crazy hours, and finally to JCB for doing what you do. This is a very important service to Indian literature, and thank you so much for this opportunity and award. Nandri, Vanakkam.
As the evening draws to a close, let's look to the horizon, to the manuscripts yet to be penned, to the stories yet to be told. The JCB Prize for Literature will return year after year to celebrate this undying spirit of Indian literature, to ensure that stories we hold dear today become the heritage of tomorrow. A special thank you goes out to Mr. Manish Thyal, our Director for the JCB Literature Foundation, for your constant guidance and support. And to the team at the JCB Literature Foundation, Shelly Prabha, Priyanjali Datta, and Adya Parashar. And thank you all for being the torchbearers of this grand literary tradition. Thank you for the narratives that have and will continue to define, challenge, and enrich our lives. I invite every one of you to please join us outside for dinner.